Yeah. So before starting, very good afternoon, Anuj. My screen is visible, right? Just a second. I'll just share the screen and just let me know. Now it's visible. Okay, no worries. I'll do one thing. I'll share it again. Yeah, just now. Great. Yeah. Great. Okay, great. So, very good afternoon, guys. Welcome to Bank Nifty expiry. Today, we have seen spectacular momentum starting with, if you can just see the momentum also, one of the highest intraday gains in Bank Nifty in recent past. Since morning we have been quite aggressive on बैंक निफ्टी. आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, सो हम पहले बैंक निफ्टी पे ही फोकस करेंगे. बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट हम लोगों ने 1500 1300 प्लस पॉइंट्स की रैली देखी है since the opening tick, and today it made a new lifetime high. Whereas on the contrary, if we talk about Nifty, so Nifty has been a lackluster in a range of 50 to 100 points, and broader market में हमने थोड़ा cool off देखा है. So there is a too much disparity within the market. Bank Nifty at lifetime high, Nifty was in continuous uptrend, but today it took a backseat, and mid cap and small cap also some little bit wavery was there at the start of the day. But as we are focusing more of Bank Nifty, I'll directly comment on the Bank Nifty first, and then we can discuss about the stocks, chart setups, BTST ideas, and everything. So first we'll talk about Bank Nifty. जो Bank Nifty का पहले hurdle हुआ करता था previous all time high 51 133, उसको easily surpass किया है. And if we go on the smaller time frame chart, slowly steadily Bank Nifty is moving higher. So अगर आप सुबह से देखे जाए तो धीरे धीरे बैंक निफ्टी का बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, from 50,750 to 51,000, from 51 to 51,250, from 250 to 500, and now immediate base for Bank Nifty on intraday basis is 51,650 zones. So 51,550, 51,600 is the intraday immediate support for Bank Nifty. Bank Nifty life high पे ट्रेड कर रहा है. On the upper band, resistance would be psychological 51,750, then 52,000 marks. So आज I think option buyer के लिए one of the best days रहा है so far in Bank Nifty. Since morning we have seen tremendous momentum, और last half an hour 45 minutes में भी काफी बड़ा अप हमने देखा है. So couple of calls are there on Bank Nifty that we are tracking. But first हम पहले levels के बारे में बात करेंगे. Immediate basis पे 51,500 बैंक निफ्टी का 555 600 एक मेजर सपोर्ट है. अपर बैंड में 52,000 इज अ साइकोलॉजिकल लेवल एंड न्यू लाइफ टाइम हाई टेरिटरी के. अब इसी के साथ हमें प्ले करना है तो हमें पहले कॉल ऑप्शंस को ट्रैक करना पड़ेगा. एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि प्रीमियम्स काफी बड़े स्पर्ट हुए हैं, सो अकॉर्डिंगली हमें प्ले करना पड़ेगा जिसमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड भी मैनेज हुए. सो फार व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्रैकिंग टू स्ट्राइक्स. जैसे हम बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी में ऑलरेडी हमने लास्ट 15 मिनट में एक अच्छा अपटिक भी देखा. So right now we are tracking 51,700 call and 51,800. As of now we are tracking this two call in Bank Nifty. 51,700 का कॉल अभी हम देखें तो अराउंड 150 के अराउंड चल रहा है, वो स्क्रीन पे लगा हुआ है, हम ट्रैक कर रहे हैं. एंड फ्रॉम पास्ट 15 मिनट्स ऑलरेडी एक बड़ा अपमूव देखा है फ्रॉम 35-40 ऑड लेवल्स. 51,700 का कॉल हमने बड़ा स्पॉट देखा है टुवर्ड्स 160 लेवल्स. So these two calls are on radar as of now, 51,700 and 51,800. Definitely will update कि कौन से कॉल को क्या लेवल पे प्ले करना है. मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है, so definitely will go on the buy side itself. बट हमें देखना है कि कौन से प्रीमियम को अटेम्प्ट करना है और कौन सी स्ट्राइक को प्ले करना है जिसमें आप मोमेंटम भी प्ले कर पाए और अपना रिस्क भी मैनेज कर पाए. So Anuj, what we can do is we can just take couple of queries also, and then we can just revisit the Bank Nifty on which level we can focus upon, because tremendous up move we have seen in Bank Nifty. So we are waiting कि कोई एक fresh setup बनेगा, थोड़ा सा dip अगर आता है तो definitely we can play the Bank Nifty strike again. So अभी हमने levels बोले हैं 51 से 650 is the intraday support for Bank Nifty. Upper band 52,000 is the level, resistance level as per the OI data. So it's a blue sky zone for Bank Nifty, and SBI, HDFC, ICICI leading from the front, जिसके वजह से हमने एक बहुत बड़ा अच्छा अपमूव देखा है. So what we'll do is, in the mean also when we are talking, Bank Nifty is continuously making highs. So what we can do is,
For the immediate basis, I'm also tracking the strike 51,700, 51,800. सो अगर मैं 51,800 का कॉल देखूँ, वो भी अराउंड 135 140 चल रहा है, और स्पॉट चल रहा है 51,850. सो अभी ये कॉल रडार पे है, 135 चल रहा है, हम इसको बोलेंगे कि कौन से लेवल पे अटेम्प्ट करना है. सो विल अपडेट ऑन दैट. इन द मीन टाइम वी कैन टेक कपल ऑफ स्टॉक क्वेरीज, अनुज, एंड देन कैन वी revisit the bank nifty trade. Yeah. So generally, what we've seen in the past also, lot of times certain sector underperform, certain sector outperform, and in the meantime, what we have seen पिछले 10 दिन से broader market and mid cap were outperforming, but bank nifty was on a dull note. But in the meantime, if I just see there is continuously uptake in the bank nifty, so what we can do is I'll just revisit one more strike 51 800 and 51 900, because एक बड़ा move आ रहा है. So I'll just check the strike. 51 900 का call चल रहा है around 120 130 के points. So I'm tracking that. And as we are speaking also, Anuj, you can just see the very fast move, and there is two strong momentum across bank nifty. सो क्या कर सकते हैं हम, एज वी स्पीकिंग 51,900 का कॉल हम देख रहे हैं, अभी 139 चल रहा है, 135. सो इसको हम ट्रैक कर रहे हैं और डेफिनेटली विल अपडेट ऑन द डिप साइड. इन द मीन टाइम, जैसा आपने बोला कि क्यों मोमेंटम है, सो बहुत टाइम से बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा था, बट उसके सिवा भी अगर देखा जाए, सो आज एक बहुत बड़े मूव के बाद 50,250 एक लेवल हुआ करता था, जो बहुत टाइम के बाद निकला कल रेंज, और आज हमने रैपिड मूवमेंट देखा है, जिसके वजह से एक मैसिव स्पर्ट है. उसके साथ एक्सपायरी डे भी थी, जिसके वजह से अभी चल रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट्स आपका अनवाइंड हो रहे हैं. एंड एज इट सेड कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे था, सो बैंक निफ्टी हैज टू कैच अप आल्सो. सो वो कैचअप रैली प्ले आउट हो रही है, काफी स्ट्रॉन्ग मीनिंगफुल गेन्स बनाए हैं, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक मेनली. So that is one of the main key reason. In the meantime, if I'll talk about, if we see countries uptakes and there's free flow across banking, so what we can do is 52,000, 51,900 अभी चल रहा है 160. What we can do is 151,900 कॉल को हम रडार पे रखेंगे, अभी चल रहा है अराउंड 160 के अराउंड. एंड अभी बैंक निफ्टी स्पॉट चल रहा है 51,935, 155 अभी चल रहा है. सो व्हाट वी कैन डू इज विल बाय दिस ऑन डिप near 110 120 levels, 100 around 100 levels. So I'll repeat again, हमें कंफर्ट ध्यान रखना है. 51,900 कॉल हम 100 से 110 की रेंज में बाय करेंगे, अभी 148 चल रहा है. आई एम रिपीटिंग अगेन, 51,900 कॉल अभी 143 चल रहा है. सो विल बाय इन द रेंज ऑफ 100 to 110, कीपिंग स्टॉप लॉस ऑफ 60. सो अभी भी अगर आप देखोगे, सो देर इज रैपिड मूव इन बैंक निफ्टी, ऑलमोस्ट हमने अभी 100 पॉइंट का डिप भी देखा है. सो इरेटिक मूव रहेगी. सो विल अपडेट कि कौन से लेवल पे एंट्री करना है, विल डेफिनेटली अपडेट ऑन दैट. Anuj, if you can just see the swings in Bank Nifty, there's almost a dip of 150 points in just couple of seconds. So what we can do is, we have seen some cool off. 51,900 कॉल अभी हम ट्रैक कर रहे हैं, अभी भी 105 चल रहा है. एंड इफ यू सी, काफी बड़े मूव स्विंग्स है. लास्ट टाइम हमने एक और चीज की थी, इसी के साथ हमने क्या कर दिया था, हमने बुल कॉल इनिशिएट किया था. So in that, what we do is we can play the volatility also, and at the same time we can play the swing also. So that would be current junction pay. What we'll do is we'll go with 51,900 call and sell 52,000 call. So that's a bull call spread. Anuj, I'll repeat. In Bank Nifty, we'll go with bull call spread, जिसमें हम 51,900 का कॉल बाय करेंगे, 52,000 का कॉल सेल करेंगे. कॉस्टिंग रहेगी अराउंड 30 to 35 पॉइंट्स. अराउंड अभी चल रहा है, अराउंड 30 to 35 पॉइंट चल रहा है. 51,900 कॉल एंड सेल 52,000 कॉल. स्टॉप लॉस रहेगा 10 पॉइंट्स, रिवॉर्ड रहेगा 70 पॉइंट्स. आई होप अनुज, आई कैन, माय वॉइस इज क्लियर, यू कैन हियर इट राइट. 70, yes. So the net difference, I'll repeat, will initiate Bank Nifty bull call spread by buying 51,900 call and selling 52,000 call at net inflow of around 30 to 35 points. अभी I'll just check the spread कि कितना spread चल रहा है, because there are huge swings, and अभी gap चल रहा है around 40 points का. So 30 to 35 के points में हमारी buy करने की सलाह रहेगी बैंक निफ्टी के spread को. स्टॉप लॉस रहेगा 15 पॉइंट नेट का, और टारगेट रहेगा 70. इन द मीन टाइम,
Yes, because there's a reason, Anuj. If we see there is huge swings, and by the time I'm saying also there is a almost a dip of 100 points. So there is no means, because the entry and exit level will be way too different to play this volatility. So the trend is positive, and we have seen a massive rally. But the issue is over here, as last we are moving heading towards the expiry time, so the swings would be way too huge. And if we just see, Bank Nifty has almost given up 200 points from the higher levels. So this is the nature of Bank Nifty as we already know it. That's why we are a bit reluctant. पहले हमने सोचा, but there was no major this thing. That's why there was a big swing. So we waited for it. एंड हमने नया ट्रेड इनिशिएट किया है बैंक निफ्टी का बुल कॉल स्प्रेड by buying 51,900 call and selling 52,000 call at net inflow of around 30 to 35 points. अभी वो स्प्रेड भी चल रहा है around 35 points. स्टॉप लॉस रहेगा 15 पॉइंट का, टारगेट रहेगा 70 पॉइंट्स का. If the single trade was initiated, so in that case it's better we need to exit it, as we already suggest the level for 51,900 call is around 60 levels, and there is huge swings. So अगर किसने लिया भी है, so better would advise कि 60 पे exit करे, because swings काफी बड़े हैं. Best way to play this swing is to play through bull call spread. I think that would be a better way to play this swing, because आप गेम में रहोगे and volatility को भी आप मैनेज कर पाओगे. जान. And also why I'm saying this, Anu, because it's a reason. And as everyone definitely option buying is all about the momentum. मोमेंटम के साथ वोलेटिलिटी भी काफी है और स्पॉट प्रीमियम काफी ज्यादा हुए, जिसके वजह से काफी बड़ा हमने अपटिक ऑलरेडी देखा है. सो रिस्क रिवॉर्ड वाइज वी हैव टू आल्सो सी. इन द मीन टाइम इफ वी सी एनी अनदर डिप एंड हमें यहाँ से लगा कि वापस अपटिक आया, सो अलॉन्ग विद बुल कॉल आल्सो वी कैन इनिशिएट सम नेकेड कॉल आल्सो, बट एटलीस्ट कंफर्ट रहना चाहिए. ऑप्शन बाइंग में कंफर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अकॉर्डिंगली दैट्स व्हाई वी हैव सजेस्टेड बुल कॉल स्प्रेड फॉर द टाइम बीइंग. We can take a couple of stock queries also, Anuj, and then if there is another opportunity in Bank Nifty, we'll update on it. Definitely, Anuj, and just want to add one more thing. So generally, even we favor naked momentum calls, definitely. But as per the market, there are times when we have to little bit blend ourselves, we have to customize ourselves, and we have to play as per the market swings. So that is the one reason. Apart from that, in the meantime, as we're discussing, if we find any other opportunity for naked option also, we'll definitely update. Okay. Castrol, right? So if I see overall chart setup wise, good momentum seen across broader market, and in spite of since morning some choppiness was there in mid cap indices, but still stock specific action was quite good. So looking from a overall perspective wise, 200 is a major support for Castrol. Positionally, the setup looks good for 215 to 20 plus. So positionally wise, the setup is good. Some cool off is seen from higher levels, but the bigger trend is positive. So continue to hold. Yeah. So we are also, since in morning we have played couple of ideas, but in the meantime what we can do is I'll just scan also. So आज काफी अच्छा मोमेंट हमने शुगर स्टॉक्स में भी देखा है. एक बड़े अपटिक के बाद 2-3 दिन पॉज हुआ एंड देन वापस सीन मोमेंटम. अपार्ट फ्रॉम दैट, सिंस मॉर्निंग वी वर पुशिंग जोमेटो, एंड आई थिंक आवर कम्युनिटी आल्सो जोमेटो इज वन ऑफ फेवरेट पिक. काफी बार हमने वो क्वेरी सॉल्व भी की है, देखी भी है. In the meantime, BTST idea is Hudco. So Hudco, overall the setup is quite strong, monthly, weekly setup wise. Market की choppiness के बाद भी it is holding. So Hudco is a BTST idea first. 282 से 283 की रेंज में बाय कर सकते हैं. 277 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर 295 then 300 के लिए Hudco is a first BTST trade. In the meantime, I'll just revisit the Bank Nifty spread that we have initiated. So I'll just check the premium also, as there are good swings. So I'll just check the premium. 51,900 call and 52,000. So right now, as the premium spread is around 42 points.
हमने अराउंड बोला था 30 से 35 की पॉइंट्स में बाय कर सकते हैं, 15 का एसएल रख के ऊपर 70 पॉइंट्स के लिए, दैट इज द ट्रेड. One good part about this momentum has been seen HDFC Bank is leading from the front, because of which we have seen such massive gains in Bank Nifty. And as we say, it's like a कोहली है, इंडिया टीम का कोहली है, जब तक वो परफॉर्म नहीं करे तब तक बैंक निफ्टी नहीं चल सकता. एंड दैट्स हाउ बैंक निफ्टी मेजर ड्रिवन बाय एचडीएफसी बैंक. Again we have seen an uptick of almost 60-70 points, and these are the swings that are happening. So जो हम spread बात कर रहे थे बुल कॉल बैंक निफ्टी का 30 to 35 पॉइंट्स का, वो स्प्रेड हो गया अराउंड नेट 50 पॉइंट्स. सो 51,900 का कॉल बढ़ा है, 52,000 का कॉल भी बढ़ा है, बट वी हैव गॉन थ्रू बुल कॉल स्प्रेड टू प्ले दिस स्विंग. One BTS strategy that you have shared is Hodko. Apart from that, overall from as a banking space itself, SBI has given a range breakout and looking quite good. So banking space में अगर banking की रैली आ गई है, but stock specific play करना है, so हम SBI में play कर सकते हैं. 6 से 7 दिन कंसोलिडेट कर रहा था 845 850 के ऊपर. हमें लग रहा है धीरे धीरे वापस 875 880 तक जा सकता है. So SBI would be a preferred pick within PSU pack. In the meantime, we can also take few stock queries, Anuj, and then again revisit. Yeah, Anuj, you're on mute. Tomorrow. So this time, what we have seen very strong sector rotation across all the market wise. So sometimes IT comes in support, sometimes banking comes in support. If we talk about Infosys, overall within the IT pack, it has been underperformer, but एक अच्छा base बना लिया है weekly scale पे around 1490 95 के around. So from a setup perspective, we can expect rally of 20 to 30 points, not major, but immediate basis पे 1490 का stop loss रख के ऊपर 1530 1560 के लिए Infosys at current junction one can go long. Also adding to this, and Nifty IT has seen good momentum. So within Nifty IT space, large cap में Infosys and HCL are looking good. Mid cap में OFS is one of the very strong counter across the mid cap space, trading a lifetime high. So OFS positionally काफी हमें अच्छा लग रहा है within the IT pack. So that would be a preferred pick within IT space. That's really nice, but make sure keep booking profits if you're able to play that swing, because there are huge swings within the ATR. And if we see in Bank Nifty also, we have seen an uptick, then a downtick, and now again. So definitely keep booking profits if you are able to play that swing. Yeah, just a second. Bajaj Auto, right? So if I see overall Bajaj Auto, so we have been quite bullish on the entire auto pack itself. जैसे आपका buying price काफी नीचे है, so I think continue to hold this stock. It is trading a lifetime high. It is close to touching 5-digit figure. And as looking at the overall, our Indian bull market story is intact. Auto sector is continuously uptrend. आप होल्ड करके रखिए जब तक 9,000 के ऊपर है स्पॉट बेसिस पे बजाज ऑटो. कंटिन्यू टू होल्ड द स्टॉक फॉर एन अपसाइड मूव टुवर्ड्स 11,000 12,000 प्लस लेवल्स. R power. I'll just tell you. R power, if I see the overall setup wise, after a big uptick, we have seen sideways move. So immediate basis में 35 का resistance है. I think that would be a good entry point to book profits. 35 के ऊपर ही fresh momentum है, that would be good entry point to book profits. Also, just giving an update of Bank Nifty, जो हमने strategy suggest की थी, it made a spike of around 30, 40, 45 points, and post that now it's around net cost of around 20 points, 15 to 20 points. So एक बड़ा uptick देखा, and then we have seen a crash in Bank Nifty. So this is the reason that we suggested bull call spread, in which we knew that the risk is limited and at the same time reward is also limited, because there were huge swings. Now the net premium is around 17 to 18 points itself. So we'll just see for a couple of more minutes and accordingly we'll play. ऑप्शन में भी अगर जो हम पहले कॉल के बारे में बात कर रहे थे, एक रैपिड हमने फॉल देखा, ऑलमोस्ट 250 वाला करेक्ट होकर 120 हो गया. जनरली जब एक बड़े मूव्स आते हैं, सो लास्ट हाफ एन आवर या 15 मिनट्स जनरली ये ट्रिकी रहते हैं, जिसके वजह से वो स्विंग प्ले करना पड़ता है हमें. सो बिकॉज ऑफ विच वी शिफ्टेड टू स्प्रेड्स एंड ट्राई टू कैपिटलाइज समथिंग फ्रॉम इट.
Geo Finance, if you see after a big up move, it has been sideways from the past couple of weeks. Positionally, the trend is quite strong. Immediate basis 345 major support है, ऊपर में 365 368 hurdle है. So bias positive ही है for 400 420 plus. So अगर कोई long term hold किया हुआ है, continue to hold the stock with keeping stop loss of 335 for an upside move towards 400 420 levels. RVNL. So another favorite sector and quite momentum we have seen across the real stock also. So एक बड़े अपटिक के बाद हम sideways हो गया RVNL, बट स्ट्रक्चर वाइज 375 70 एक मेजर सपोर्ट है, अपर बैंड में 400 और 420 रेजिस्टेंस जोन है. सो बायस ओवरऑल पॉजिटिव है, अभी मेजर मोमेंटम नहीं है. 400 की क्लोजिंग के ऊपर ही फ्रेश मोमेंटम रहेगा. So that would be a preferred idea to buy above 400 levels for an upside move towards 420 plus levels. Also, just to give an update on the bank nifty spread also, the spread that we initiated uh, from spread was around 30 35 points. It made a swing of around 45 points, 10 to 15 points, and now it's now near around back to 15 points. So that was our stop loss level that we have mentioned for the bull call spread. We tried to play that swing, but through spread we were able to play it out. But at the end, if we see, there was a huge uptake, then again a downtake. So that was the reason that we played the bull call spread, and that current junction will close the bull call spread also, because seen already seen a uptake and then again a downtake. That, and that's really the point, Anu. That's really supportive also, and encouraging also, that people have now got the knack of it, of option buying, when to and how to book profits, when to, if it's not working, so exit it quickly also, that also we suggest. And when generally when such moves happen, by the time we speak, by the time the market reacts, it's very quick. And as we were discussing also, I think we have seen a correction on bank nifty of almost 400 points from its high. So this is the nature of bank nifty, but that's really encouraging if some people are able to book profits through spreads or through naked option. Definitely, BTST idea we have shared was Hudco. Apart from that, PSU space, SBI is looking quite promising. Slow and steadily, it can again reclaim its previous lifetime high. Also, एक जैसा आप पहले ही पूछ रहे थे, इन्फोसिस. सो इन्फोसिस करंट जंक्शन पे CDI में भी हमने पुश किया है, बिकॉज करंट जंक्शन में रिस्क reward is quite favorable. So from a 1 week perspective also, Infosys we can buy in the range of 1510 to 1515, with keeping stop loss of 1480 for an upside move towards 1570 1590 levels. KEC International. Yeah. So, EKC, what's the rate? 900. You can skip that. You can take. We can take the another one. EKC. I'll just check. So there's average Canto. Yeah, so I'll just check the chart. So overall, if we average Canto, the rate is 135. If we see overall the stock is under downtrend, so immediate basis 142 is the hurdle level. जब तक 142 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, तब तक काउंटर ओवरऑल इज इन साइडवेज टू डाउन ट्रेंड. So immediate support is 124, upside hurdle is 142. That's really the best part, Anuj. And as we have been associated with, it's been almost quite a time. And the good part is that the audience are able to connect. The audience are able to understand the body language. The audience is able to connect the market. That's really nice. As rightly said. In the meantime, also keep one thing in mind. Little bit we have seen spike in VIX in volatility, but overall, if we see the broader market texture, the trend is still strong, because continuously seeing supported by some other indices. So as bank Nifty is taking the lead now, the support is coming from the IT. So this generally bodes well for Nifty, and for banking we have seen an outperformance of almost 1,000 points rally intraday itself. So sector rotation will keep happening. Try to keep with playing with the sectors on positional basis. 23 300 is the Nifty major support.
For Bank Nifty, 50,750 would be a major position support for Bank Nifty. So these two are major levels for Bank Nifty and Nifty to watch out for. In the meantime, some cool off is seen in mid cap indices and small cap stock. So also guys, जो आपको stocks में पैसे बन रहे हैं, keep booking profits if it's a trading bet. Investment bet है, that's definitely a good stock to hold. But अगर trading bet है, so definitely keep booking profits. Also, in the meantime, we can take couple of stock queries, Anuj. Engineer India, overall, the bigger trend of the stock is quite strong. And if you see good momentum is seen in overall setup wise. So अगर आप डेली स्केल पे देखें तो एक ब्रॉडर रेंज है 225 से लेके 200 265 की. आज हमने थोड़ा ऊपर से कूल ऑफ देखा है, बट स्टिल सेटअप वाइज 250 255 इज अ मेजर सपोर्ट जोन. जब तक ये इसके ऊपर है बाइस पॉजिटिव रहेगा फॉर 275 280 प्लस. So 255 is a major support zone for an upside move towards 275 280 levels. Yeah. Once there was a very good swing in this counter, बट पोस्ट दैट एक साइडवेज चला गया था. और अभी भी नेचर अगर देखें स्टॉक तो साइडवेज ही है. नीचे 165 का एक सपोर्ट है, ऊपर 182 185 का हर्डल है, एंड पिछले काफी टाइम से एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है. सो करेंट जंक्शन ऑल्सो देयर इज नो मेजर मोमेंटम वी हैव सीन. विल कंटिन्यू टू अवॉइड. किसी ने अगर होल्ड करके रखा हुआ है, सो 165 का स्टॉप लॉस रखे क्लोजिंग बेसिस पे, देयर विल बी नो फ्रेश ट्रिगर एज ऑफ नाउ, क्योंकि कोई मोमेंटम नहीं है स्टॉक में. Also, CDI, we have initiated Infosys, and within banking space, SBI is looking good because after a long time it has given a consolidation breakout. So slowly, steadily, we can expect a good 3 to 4% upside move in SBI. MCA 39. So if I see the chart of M6, it is more or less near to its buying price itself. Immediate basis 3750. 3750 is a immediate support zone for MCX. Till it holds above this level, overall bias of the nature of the counter is positive. So 3750 का एक major support है. जब तक इसके ऊपर रहता है तब तक continue to hold with keeping stop loss of 3750. NHPC, if I see this chart structure, after a big downtick, it's gone in sideways. Immediate basis, 96 is the support. Upper band 103 is a hurdle level. Similar structure to ADA, there's no major momentum. So, agar position basis, one needs to hold, keep stop loss of 94. As of now, no fresh buying trigger is seen, so better to avoid. Yeah. Yes. Also, yeah. Thank you. Thank you all.